Hello. Okay, so we have done with the figure of speech, and now we will move further. Okay, now we will have literary terms. Okay, figure of speech. I hope you are clear with the last session. Okay, I have covered all the figure of speech. Just one figure of speech is left in that particular session. I am covering it right now. It's a strophe. What is this? It is addressing an absent person, object, or abstract idea as it were presented. Now let's have an example of it. So example is O death. Where is the thing? Okay, ये पूछ रहे हैं ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग. Okay, we are using astrophe. So you may not get the example because I have chosen a very difficult example for you, but you can google it. You will find so many example of astrophe. I am just telling you the definition. Addressing the absent person. अगर कोई person वहाँ पे मौजूद नहीं है, okay, object वहाँ पे मौजूद नहीं है, abstract idea जो मौजूद नहीं है, एज इट वॉज प्रेजेंट वैसा को वैसा. अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैंने ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग. इट्स अ डायलॉग फ्रॉम द विलियम शेक्सपियर. सो ओ डेथ, डेथ तो अभी हुई नहीं है किसी की, एवरीवन इज अलाइव, बट आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ डेथ. ओके, सो व्हाट इज दिस? This is I am using astrophe. Okay, so many writers have used this figure of speech several times in their literary works, so better you have some few ideas. And while uh, studying figure of speech, the first most important thing is that you are able to identify the figure of speech in a particular poem. अगर कोई पर्टिकुलर पोएम है आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की दी जाती है, तो आप क्या उसको डैफोडिल्स ले लेते हैं एग्जांपल, आई वंडर लवली एज अ क्लाउड. व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच इज देयर? आई वंडर लवली एज अ क्लाउड. आई wondered as lovely as cloud. It's a figure of speech. Identify the figure of speech. You can tell me in the comment section. Okay, now figure of speech is over. Now we will move further and we will see literary terms. This is very important. Okay, literary terms देखते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि literary terms होते क्या हैं. So it's an techniques and structure used in literature to convey meaning, styles and themes. Okay, this is the shortest definition of literary terms. Literary terms refer to the techniques and structures used in literature to convey meaning, style and themes. We have already things the what is style and what is themes in our previous session. If you haven't watched that video, please watch that particular video and you will understand what is style, themes, okay, what are the literature, all everything is covered in the previous sessions. Now let's see the structure literary terms. So आप सब एमए के स्टूडेंट है, you are already clear your net examination, shed examination, and right now you are preparing for assistant professor, so you may be aware of these terms as well as, but just here I am here for the quick revision. I know you know everything. So सबसे पहले जब हम structure literary terms की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है plot. Then what is the plot? Plot is the sequence of the event in a story. कि स्टोरी का इंट्रोडक्शन होगा जिसमें आपको एक्सपोजिशन मिलेगा, ओके, राइजिंग एक्शन होगा, क्लाइमेक्स होगा, फॉलिंग एक्शन होगा, रिजोल्यूशन होगा. जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. सो वी विल हैव दिस ग्राफ लाइक दिस, देन दिस. ओके, सो व्हाट इज दिस? हियर यू विल हैव एक्सपोजिशन, एक्सपोजर मिलेगा आपको यहाँ पे, देन यहाँ पे आपको राइजिंग एक्शन मिल लेता है, और यहाँ बीचों बीच आपको क्लाइमेक्स मिलेगा, और फिर यहाँ पे फॉलिंग एक्शन शुरू होगा, नीचे की ओर आएगा, और यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा. और ये हमें किसने बताया था? ये इट इज टोल्ड बाय द एरिस्टोटल. ओके, नाउ आफ्टर दिस वी नो व्हाट इज प्लॉट. there is no difficulties to understand what is plot. Now we will have theme. Themes क्या होती हैं? The central idea or message of a literary work. किसी में moral lessons हैं बहुत सारे, then it is considered as a also the theme. अब जैसे कि for example poverty ले लेते हैं. poverty, चार्ल्स डिकेंस की बहुत सारी novels है ना.
आपने पढ़ी होंगी, विक्टोरियन एज से ये बिलोंग करते थे. सो यू विल हैव एनी मैसेज. Okay, chimney sweeper work is there that provide the messages. Okay, whatsoever things we are getting in every particular literary work, there must be a theme. Without theme, no literature can be produced in this world without a message or without an idea. So you may be aware about it, I am sure. Okay, now we will have setting. सेटिंग में देखते हैं द टाइम एंड प्लेस व्हेन द स्टोरी occurs. ओके, सेटिंग्स कहाँ पे, टाइम और प्लेस. फॉर एग्जांपल लंदन में सेटिंग रखी गई है किसी भी प्ले की. ओके, टाइम पीरियड बताते हैं विद इन अ डे. एक डे है, आपने बहुत सारी वर्क्स देखी होंगी, विद इन द पीरियड ऑफ अ 1 ईयर. ओके, एक साल बाद. आप बहुत सारी मूवीज देखते हैं, उसमें लिखा जाता है 115 years लेटर. व्हाट इज दिस? दिस इज सेटिंग. setting of a film, setting of a particular work. Okay, you may be aware of it also, I know. And now let's see the characterizations. आपने characterizations कैसे किया है? एक सक्सेसफुल वर्क जो होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है? स्ट्रक्चर. कि आपका क्या स्ट्रक्चर था. ओके, सो लेट्स सी हियर the way a writer develops character in a story, that is called as characterizations. There are two types of characterizations. First is direct and another one is indirect. तो जो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है, द राइटर्स टेल्स अबाउट द कैरेक्टर्स, सीधे सीधे राइटर्स आपको बता रहा है कैरेक्टर्स के बारे में. और जो इनडायरेक्ट कैरेक्टर होता है, द राइटर शोज थ्रू द एक्शंस, डायलॉग एंड etc. आपको ये सीधे सीधे तो नहीं बताएगा, आपको घुमा फिरा के आपको ये खुद ही से समझना पड़ेगा. इफ यू आर गेटिंग एन कैरेक्टर by खुद से, then it is known as the indirect characterizations. And if characterization is showing by the director or the writer, then it is called as direct characterization. Very easy. Now let's see point of view. Point of view कि किसके point of view से ये बात कही गई है. Okay, there are 4 kind of point of view which is really very important. As a student of English literature, I hope you are aware of all these point of views. If you are someone who don't know about the point of view, how many point of views are there in English literature, then this video is for you, and you have come to the right place to understand everything in very much details, in very short definitions, and in very short examples. You will grab all the knowledge of English literature on this platform. So it's really very great to see you all here. You are on the right platform, right track to crack any examination related to English literature. Either it can be assistant professor, NET, SET, JRF, everything. Okay, just stick to my videos, and every day there is 1 to 2 videos, so you have to just watch it, and you will be a genius of English literature. It's my surety. Now let's see the perspective forms of a story is told. Then first person is that. First person हमेशा narrator होगा. Second person you, narrator rare. Narrator कभी कभार ही आएगा. Second person view of, जैसे कि for example आप हैं, you. मैं आपके बारे में बता रहा हूँ, then it is second person. But if I am telling about myself, it's my first person. Okay. Now we have third person limited and third person omniscient. What is this omniscient? First of all, we have to understand what is this omniscient. Knows thoughts of the all the characters. ये आपको अदृश्य है. It's not visible. आप बट समझ पा रहे हैं. Okay, so आपको हर एक कैरेक्टर्स के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू तो पता है, बट यू कैन नॉट सी द पर्सन ऑन द स्क्रीन और ऑन द प्ले और एनी वर्क. एंड व्हाट इज फॉर थर्ड पर्सन लिमिटेड? फोकस ऑन वन कैरेक्टर. और थर्ड पर्सन में आपको केवल एक कैरेक्टर पे होगा, बट यहाँ पे आपको यू विल सी सेवरल कैरेक्टर्स. And if there are several characters point of view, then it is third person omniscient. Please note it down. It's really very important point. And total there are 4 point of view. There are 4 point of views are there. Okay, that's all for this point of view. Now let's see next thing, that is foreshadowing. What is this foreshadowing? Very important terms. अब जो terms आएंगी, अब ये आपको बहुत confuse करेंगे. अब आप इन चीज़ों से aware नहीं होंगे. What is foreshadowing? Foreshadowing. So foreshadowing है hints or clues about what will happen later in the story. जब आप कोई movies देखते हैं, आप कोई play पढ़ रहे हैं किसी particular writers का, तो आपको
एक आइडिया हो जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है स्टोरी में, आपको एक हिंट दी जाती है, आपको एक क्लू दिया जाता है, तो जिससे आप पता कर सकते हैं ओके अगर चोर ने चोरी की है अब ये हाँ पुलिस के द्वारा पकड़ा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल धूम मूवी को लेते हैं, यू नो व्हाट इज गोइंग टू बी अप नेक्स्ट, you are aware of that particular situation. What is that called? That is called foreshadowing. Shadowing मतलब परछाई है, परछाई के आगे फोर लगा है, foreshadowing। आप इस टर्म से ही समझ सकते हैं कि ये टर्म क्या कहना चाह रहा है। इट्स नॉट रियली वेरी मच डिफिकल्ट टू एन इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट। foreshadowing, फोर मतलब बिफोर, before, hints and clues what will happen later in the story, very clear, very okay। Now let's have another example, that is flashback। flashback ये भी आसानी टर्म्स है। लेट्स अंडरस्टैंड द व्हाट इज फ्लैशबैक, अ सीन्स दैट टेक्स अ रीडर बैक इन द टाइम टू एक्सप्लेन पास्ट इवेंट। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, आपको मूवीज बीच से दिखाई जाती है और फिर रियल मूवी शुरू होती है जो कि आपको फ्लैशबैक में दिखाई जाती है कि वो आज, जैसे कि आपने बहुत सारी वो भी देखी होंगी वेब सीरीज, ओके दे आर ऑल्सो यूजिंग फ्लैशबैक। आपको पहले आगे की स्टोरी दिखाएंगे, देन दे विल लेट यू नो टू द फ्लैशबैक, ओके। Then allegory, what is this? A story where characters and events symbolize deeper meaning, where any character is symbolizing the deeper meaning, that it is known as allegory। every story have this thing, okay। example लेते हैं Animal Farm by George Orwell, symbolizing political corruption। in so many writers we see the political corruptions through several different kinds of examples, but we cannot say that this is the particular example, but we call it as a allegory, okay। I hope I am able to understand you everything very clearly and in a very few words। now we will have stylistic and thematic literary themes terms, sorry, okay। so now what we have, now we have stylistic and thematic literary terms। so let's talk about the first one, that is symbolism। what is symbolism? Symbolism means using objects, colors, characters to represent abstract idea। if you are representing the abstract idea using objects, colors and characters, then it is known as symbolism। now let's have an example to understand it very quickly। तो हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल, अ डव सिंबलाइजेस पीस। आपने एक चिड़िया देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है, ओके। and if you see this word, then what is this symbolizing? This symbolizing peace। you can see the white flag, okay, white flag also symbolizing the peace, okay। symbols, we are using symbols, in writers use so many symbols। आपको to kill a mocking bird, Harper Lee, by Harper Lee, it's a work। mocking word किसको symbolize कर रहा है? you can comment it down। mocking word symbolized what? you have to answer me in the comment section। now we will have satire। what is this satire? satire, using humor, irony, exaggeration to criticize society, politics and human behavior, where हम किसी चीज के ऊपर तंग कस रहे हैं, okay। then what we are doing satire। example लेते हैं जोनाथन स्विफ्ट, a modest proposal। किसके ऊपर है ये satire work? you have to comment me। and there is one more about Gulliver's Travel, okay। all these work are the example of satire on the societies as well as politics or the human behavior, okay। by yourself you have to find these all things, okay। आप अगर कोई वर्क पढ़ रहे हैं, आप, मैं बताना चाहूँगा आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, जो भी राइटर है, पर्टिकुलर राइटर ले लेते हैं, इसको आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, उनके जो मेजर वर्क्स हैं वो पता होने चाहिए, और ये जो मेजर वर्क्स हुए हैं ये कब पब्लिश्ड हुए हैं, पब्लिश्ड भी आपको देखना है, इसके साथ साथ कब लिखे गए हैं, रिटर्न भी देखना है, ओके। उसके बाद हमें देखना है उसकी थीम्स क्या क्या हैं, और अगर ये फॉर एग्जांपल सटायर है तो किसके ऊपर है। these are the important things when you are preparing for any examination, okay। this is the basic detail। now let's move to the another literary terms, that is motif। what is motif? motif is a recurring elements, मतलब बार बार वो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, that is called as motifs।
सिंबल्स, थीम्स, आइडियाज, एक ही बार बार थीम्स आपको रिपीट हो रही है हर जगह, हर स्टोरीज में. इन देन व्हाट इज इट? इट इज मोटिव. इट इज नॉट एज नाउ, इफ symbol is repeating then it is motive. Okay, please try to understand, it's very easy, it's not so difficult. Okay, so whatever symbols is repeating, it's motive. Whatsoever theme is repeating, it is motive. Whatsoever ideas is repeating, it's motive. Let's have an example. Light and darkness in Romeo and Juliet. So many times this event, light and darkness, है भैया. कभी यहाँ पे एकदम जो रीडर है वो एकदम हैप्पी हो जाता है और एकदम से सैड हो जाता है. ये बार बार होता है इस प्ले के अंदर. रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द पब्लिकेशन डेट ऑफ द रोमियो एंड जूलियट बाय विलियम शेक्सपियर. नाउ लेट्स मूव फर्दर टू द आर्chetype. व्हाट इज आर्chetype? See, archetype is nothing. A universal character, types, theme, situation represent across literature. Okay, that is called archetype. For example, there are different elements. For example, moon, sun. Okay, black color, or you can say night. All these are archetype. Let's have an example. The hero, Harry Potter, Odyssey, Superman. All these are heroes. And what is hero? Hero is the universal character and it is called as archetype. It's really very easy to understand. Okay, that is the reason why I bring a single line definition and the single line examples, so that आप कंफ्यूज ना हो. आप अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली है, आपके पास ये नोट्स हैं, यू आर श्योर दैट यू नो एवरीथिंग इन डिटेल, इन वेरी शॉर्ट थिंग एंड इन वेरी सिंपल वे. सी, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ये बहुत ही सिंपल है. मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता हूँ. दैट इज़ द रीज़न वाई आई ब्रिंग सिंगल line definition as well as single line examination example, so that student not must be so confused. I have seen so many teachers who have given me 4 line examples and you explaining it in very details. Then what is the sense of it? There is no sense. Just आपको हमेशा life में simple होना चाहिए. Simplicity is the key to success in my opinion. What do you think? Tell me in the comment section. Simplicity is the key to success. It's my own thought. Now I have already explained you the archetype. Now we will see what is juxtaposition. Okay, what is juxtaposition? It's also only says the justa, and then we have position, 2 words, placing 2 contrasting ideas side by side. Let's see an example. God versus evil in Dr. Kelly's and Mr. Hyde. This is the work. You have to tell me in the comment section who have written this work. So good versus evil. Okay, poor versus rich. Poor versus Shivaji the Boss. There is one movie. What is it showing? Juxtaposition, opposite of one and another. Okay, God versus demon. Well, all these things are the example of juxtaposition. Juxtaposition. Okay. Now we have another very important literary term, stream of consciousness. सिंपल सी हिंदी में बात में अंतरात्मा की आवाज़ पे. ओके, ऑन द बेसिस हमारी मन है, हमारा क्या कहता है, जो भी हमारा मन कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ इट stream of consciousness, a narrative style that follows the character's inner thought and feelings without clear structures. There are so many examples of it. Virginia Woolf have written a work on stream of consciousness. Okay. See, we have Virginia Woolf, Mrs. Dalloway. There are so many examples that is written on the stream of consciousness technique. You can find it on the Google. Okay, if you want me the list, I can provide you. Just comment me or you can ping me on this number. I will help you out to find more examples of a stream of consciousness. Okay, now let's see next. Okay, I have already told you I will provide the list, and here I have also mentioned one example. James Joyce Ulysses is there. Okay, now we have another literary terms, that is imagery. What is this? This is descriptive language that appeals to the scenes, sight, sound, touch, taste, smell. इस सब चीज़ों को आप देखिए, आप कुछ चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं बट आप उसको देख नहीं पा रहे हैं.
बट आप एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं. ओके, आई कैन क्रिएट द इमेज इन माई माइंड, डेट इज इमेजरी. एग्जाम्पल लेते हैं, द फ्रेश सेंट ऑफ ब्लूमिंग जैस्मिन फिल्ड द एयर. व्हेन यू आर रीडिंग दिस लाइन यू कैन क्रिएट एन इमेज. आप एक इमेज बना सकते हैं. इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग आउटसाइड. व्हेन आई से दिस लाइन यू कैन हैव एन इमेज कि बाहर बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, और आपने कभी अगर बारिश देखी होगी, यू विल रिमेंबर दैट सीन. व्हाट यू आर डूइंग इमेजरी. ओके, now we have tone versus mood. Let's see the basic difference between tone and mood, which is really very important, and whatsoever thing you are getting on this video you will get it nowhere, because teacher is not covering these some basics point because they thinks that everyone should know it, but the real condition is that students are not aware of these things. That is the reason why they face so much difficulties in their examination as well as while going through an particular text. So that is the motive of my video, so that I can bring the best material possible to my students so that they have a lot of success in the field of English literature. Okay, now let's see tone and mood. Tone, the author's attitude toward the subject. Author का क्या है? Serious है, unserious है, humorous है, sarcastic है. मतलब इसका, you have seen so many memes on Instagram. Okay, they are full of scarcities. Not scarcities, it's sarcastic. Okay, I'm sorry, it's sarcastic. I'm not able to pronounce it. Okay, just let's see mood, the feeling or atmosphere. Mood आपका जो mood होता है, अभी आपका mood खराब है, अच्छा है. Okay, whatsoever thing feel you are right now feeling, it is considered as a mood. और इसमें हम अच्छे से समझेंगे रीडर एक्सपीरियंस के खुश है वो, ग्लूमी है, या फिर सस्पेंसफुल है. ऑल दीज थिंग्स एज मूड. ओके, टोन हमेशा याद रखना, टोन हमेशा ऑथर्स के एटीट्यूड के बारे में बात करेगा, जिसमें सीरियस है वो, ह्यूमरस है, सार्कास्टिक है. ओके, देन मूड में हमेशा फीलिंग और एटमॉस्फेयर की बात आएगी कि ग्लूमी है, जॉयफुल है, हैप्पी है, सस्पेंसफुल है, और दीज थिंग्स. नाउ वी विल हैव अनदर थिंग, that is genres and forms of literature, which is really very important, and that's the last. After that this session is going to the end. So if you are someone who haven't subscribed to my channel right now, please subscribe to the YouTube channel so that you will get so many videos which will helpful for your examination. If you are serious candidate who really want to crack the assistant professor examination, NET/SET or any examination, please, it will help me a lot to grow on the YouTube platform. Okay, now let's see the genres and the forms of literature. You have already aware about it. It's not really a very difficult topic. So first of all, we have prose, we have poetry, we have drama. You are already knows about the prose, ordinary written language. जैसे prose का example है novels है, short stories है, essays. These are considered in the prose, and where we poetry literally were using rhythm. अगर कोई राइम आ जाती है, मीटर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल सोनेट, हाइकूज, फ्री वर्स. इफ यू वांट मी अ वीडियो ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स लाइक व्हाट इज सोनेट, व्हाट इज हाइकूज, फ्री वर्स, all the literary elements that is used in the poetry, just comment it down, I want this video, I will be there, but it is not mentioned in assistant professor syllabus. That is the reason I have not covered them here. But if you want me a video on that particular topic, please let me know, I will create a video. Now we will have drama performance of studies. Basically there are two types of dramas, but there are all more types of dramas, but I have mentioned only tragedies and comedies. Okay, tragedies, यहाँ पे tragedy हो जाएगी, जिसमें आपको tragedies always have the sad endings, where comedy always have an happy ending. Okay, लेट्स इसको और डीप में समझते हैं ट्रेजेडी और कॉमेडी को. तो ट्रेजेडी जो है, अ स्टोरी विद इन द हीरोज डाउनफॉल. शेक्सपियर हैमलेट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रेजेडी. a sad ending is there, where the comedy, a light hearted story, often a happy ending. I have already told you this in Hindi. Okay, I hope I am clear to you. Now we will have the conclusion. हमने अभी जितनी भी चीज़ें पढ़ी, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है और क्यों पढ़ी, अब हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं आगे चल के, तो अब ये देखते हैं. ओके,
तो फिगर ऑफ स्पीच में हमने देखा कि फिगर ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि इससे हम ऐड कर सकते हैं, अच्छा एक स्टाइल को प्रेजेंट कर सकते हैं, हम अपने वर्ड्स को बहुत सारा ब्यूटीफुल बना सकते हैं यूजिंग पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, यूजिंग दिस फिगर ऑफ स्पीच। देन वी हैव एन क्रिएटिव राइटिंग। इफ़ यू वांट टू डू परस्यू अ करियर in a creative writing, you should be aware about all the figure of speech. Then we have literary terms. Literary terms क्यों होते हैं? क्योंकि आप हम ये इससे हम हेल्प करते हैं एनालाइज और अंडरस्टैंड थीम्स, स्ट्रक्चर्स एंड टेक्निक्स इन द लिटरेचर को पढ़ने के लिए ये सब मदद करती हैं लिटरेरी टर्म्स। देन वी हैव mastering this concept is essential for literary analysis, creative writing and effective communication. If you are someone who really want an effective communication, literary analysis and creative writing, then you should master this concept. Okay. Okay, so that's all for today's session. Hope you like it. If you like it, please subscribe to my channel. You can follow me. You can join my Telegram channel, as well as you can ping me here. I will help you out whatsoever problem you are suffering. Okay, that's all for today's session. And in upcoming session, we have already covered Unit 1. Unit 1 is covered. Unit 2. Unit 2 is also covered. And from tomorrow, we will have Unit 3 of assistant professor examination. Okay, I have made so PPTs, and from tomorrow we will have really very interactive class. It's my promise to you. I have worked a lot on myself, as well as there are so many feedbacks. I have worked on them, and I am trying to bringing the best content, best way to present all my content to you, so that आपको बहुत ज़्यादा benefit हो, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत ना हो. Okay, just trust myself, and we will together crack the examination. It's my promise to you. Now let's see. We will have Unit 3 from tomorrow, and we have covered 3 units right now. Unit number 1 is covered, Unit number 2 is covered, and Unit number 9 is covered. We have covered 3 units till now. If you are someone watching this video and want to join my classes, you can contact me. Okay, and then we will have some more videos, and tomorrow we will start with Unit 3. Okay, thank you so much for joining me. Have a nice day. Thank you so much.